There's no bad or good emotions. Every emotion has a specific function. Every emotion can be used as a teaching tool. We usually feel angry when our boundaries, either it's emotional boundary or physical boundary, is impacted, right? That's when we experience anger. So maybe feeling angry is trying to tell us that, we have to be a bit mindful of our boundary. Mind, body and soul, आपकी spiritual health जो है, right? आपकी emotional and psychological health and आपकी physical health, तीनों का ही equal important role है आपकी overall well-being में, holistic well-being में. Welcome, ladies and gentlemen, to one more awesome episode of the Achievers Club podcast show. In this particular episode, we have a super awesome guest named Palak Dadwal, who is a grief recovery specialist, and she's also a personality who has already worked more than a decade by helping people with special abilities. She's also an aspiring author, and in this particular episode, she has shared her own wisdom upon mind, body, and soul connection, and also about emotions regulation, because no matter what happens, at every single instance of time, we are having one or the other emotions. And in this particular episode, we are going to understand how do we manage those thoughts and emotions so that those are helping us to reach to the next possible and the best possible level in our life. So please do make sure that you take full notes and watch this podcast from the beginning till the end. Palak Dadwal, ma'am, welcome to the Achievers Club podcast show. How are you? I'm doing well, thanks. How are you, Sahil? I'm doing superb. And first of all, thank you so much for being on our podcast show. And to let you know, you are the second guest on our podcast show who is actually born in India, but right now you are living outside India. So thank you so much for being on our podcast show and taking time out because of time zones as well. It was a bit difficult for both of us to connect. But again, we managed to do the podcast. So thank you so much. Yeah, thanks to you as well, since I'm feeling very glad, and yeah, it's my pleasure, and thanks for your time as well. Yeah. So first of all, for the very new audience, because we are going to discuss this podcast in depth about emotions and like how do we manage our emotions and so on. But before jumping into that, maybe you can share your story, like what was your past about and why did you choose to share this particular topic as a purpose with the audience? Yes, for sure. So, as I have been working in the human services profession for over a decade now, I started very early on in my age. Start working with kids with autism, and that's when I started to learn about how to support people living with special needs, specifically to be able to express their emotions and also be able to regulate when needed, right? Because of course, like what I feel that as human beings, right, we are not born thinkers, we are born feelers, right? Our brain is equipped to feel, to host emotions, and the reason why I picked this topic for the podcast is because I just feel that there is a need out there still, right, just to destigmatize having conversations about emotions, and also kind of spread out a message out in the community that it is okay to talk about emotions. It is okay to feel what you're feeling. It is okay to learn about how to regulate emotions more effectively. That's really true. And I love the answer. But as you mentioned in your answer itself, that as a human being, we are not born to think, we are born to feel. So, how did you know about that? And how did you make that conclusion that we as a human being are not thinkers, but we are feelers? Yes, so a lot of psychological theories, if we look back into the literature, and psychological theories support that evidence that as human beings we are emotional beings. We are labeled as emotional beings. Of course, like True. the perception out there is that our logical thinking needs to be more prominent, but like as human beings, our brain is designed to feel emotions. Like it's kind of like the way we are, I would say, like conditioned to think about emotions is a bit different when we think of psychological theories back in the days. So that's why I said that psychological theories support the evidence that we are born not to be the thinkers, we are born to be feelers. So having emotions, feeling, having intense feelings is how our brain is functioned. Superb. So, talking about the emotions, there are
wide range of emotions, but let's discuss about, as you mentioned, about the topic that is emotions regulations, right? So how do we regulate our emotions? What are the different steps? What are the different processes involved into that? Further on, we will also take certain type of emotions, whether it's fear, anger, and so on. But first, let's understand the framework, like how do we regulate our emotions? Yes, for sure. So emotional regulation takes self-awareness. And of course, it takes Okay. time. The self-awareness it builds over time, right? To become self-aware, it takes time. When it comes to emotional regulation, first of all, it is important to acknowledge your feelings and to remind ourselves that no emotions are bad or good emotions. So, for example, experiencing anger, right? Automatically, sometimes, like the way we are conditioned and are learning is anger is usually labeled as a negative emotion, right? True. But when we think of emotional regulation, anger could be a very good teaching tool. We can use anger to learn what is hidden under that, right? Again, another example, fear. Fear is True. another emotion which we experience, which is usually labeled as a negative emotion, right? But what fear is trying to tell us? Fear is trying to tell us that maybe we have to be a little bit more concerned about our safety. Our brain is trying to identify if we are in a safe environment. That's the reason why we are experiencing fear, right? True. So, what I'm trying to tell here is that, first of all, the first step of emotional regulation is reminding ourselves that no emotion is bad or good. Whatever we are experiencing, whatever emotion we are hosting, is trying to teach us, right? Okay. And that leads us into building self-awareness, because now we are trying to acknowledge what we are feeling. We are trying to dig into what it's trying to teach us. So that's the step number one. Okay. Step number two is naming the emotions. Okay, so before And try, jumping into, sorry for the interruption. Before sure. jumping into point two, like as you mentioned, we need to be aware. So can you mention some of the practices with which we can be aware, like what are the emotions which are going on in my mind? Yeah, yeah, for sure. So the practice which usually like I use, right, and which helps me to understand my emotions better is writing my feelings down. So Okay. instead of like instantly reacting to or choosing my response to what I'm feeling, right? So for example, if I'm feeling frustrated, um, to before I even like talk about my frustration, I try to write it down and organize my thought. That's my way of acknowledging that, okay, I'm hosting frustration. It's not that I'm a frustrated person. I'm hosting frustration in the moment, right? So that kind of like gives me the opportunity to understand it better and acknowledge that, it's not frustration attached to me. It's just that today is one of the day when I'm hosting this emotion, right? And writing it down as truly as I can, right? What I'm currently feeling, why I'm feeling frustrated, right? What it's trying to tell me. How can I choose my response mindfully? How I can be making sure that I'm hosting this emotion and it's not going to affect my emotional and psychological well-being negatively, or how can how can I teach myself to host this emotion in more effective way? So that's one of the practice I use, writing what I'm feeling and truly like acknowledging what I feel. Yeah. Okay, so you mean to say, whenever we are being aware by using this practice, we will be proactive rather than reactive. Yeah. Like we will think first through our logical brain whether we have to just get out our emotions, like we just have to take out all our emotions on that front person, or we just have to stay quiet and take that decision quietly. Yes. And Super. you used a good sentence here, take out our emotion, right? But Correct. what I try to think of when I'm hosting an emotion, how can I take it out in a safe way? So that's why True. I gave you an example of writing, right? When you write it down, it's a very safe way of expressing your thoughts, expressing what you're feeling, right? And also coming up with ideas how to process the emotion, right? In a very That's really safe true. way. Um,
creativity, being creative. It can be surprising to people out there, but sometimes making art, right? Experiment with your creativity is also another safe way of expressing your emotion. So instead of Super. kind of like taking it out, Mhm. it's better to explore the ways, like how can you take it out in a safe way. That's really true. And I really love the concept that we have to be more uh, proactive rather than we have to react and so on. Because with the help of writing, it's like even though we are at the peak of our emotions, still it's a safer option for us rather than taking out on somebody else. So that's a That's great right. idea. And what about point number 2 in emotions Yeah. regulation? Yeah. So the point number one, as I said, like truly acknowledging what you're feeling, reminding yourself that you're not attached to the emotion. If you're angry, it doesn't mean you're an angry person. It's just that you're hosting anger in the True, moment, right? true. Leads us to the second step of the process, which is naming the emotion and trying to explore the ways you can process effectively. So, as I said, naming, doesn't have to be like a bad or good emotion. Like we will try to like stay away from the idea that today we are, experiencing a bad emotion or a good emotion. All emotions, there is no bad or good emotions. Every emotion has a specific function. Every emotion can be used as a teaching tool. So step number 2 is naming your emotion, staying away from the idea of labeling it as a bad or good emotion, instead trying to explore what it is trying to tell me, what it is trying to teach me. So as I gave a few examples right in the beginning, that experiencing fear might be teaching us that, we have to identify threats around us, or we have to identify if we are in a safe environment. That's what our body is trying to tell us. That's what our cognitive abilities are trying to tell us when we experience fear, right? Anger, as I said, we usually feel angry when our boundaries, either it's emotional boundary or physical boundary, is impacted, right? That's when we experience anger. So maybe feeling angry is trying to tell us that, we have to be a bit mindful of our boundary, which boundary is trying to, which is getting affected, right? What it's trying to teach, what emotion is trying to teach us. So that's step number 2. So you mean to say like we have to first be aware about what are the emotions. Second, we have to accept it the way it is, and we have to introspect like what are the pros and cons of it and how we can manage it so that it is helping us rather than hampering us and even on the front person. Yes. Superb. Yes. And what's the step number 3? So step number 3, as I said, the second step, when we have labeled the emotion, when we have tried our best to stay away from, name the emotion, and we have tried our best to label it, right? That kind of is going to bring us some self-awareness. Now, step number 3 is, how are we going to choose our response? So as I have given Okay. a few examples, earlier, that we can always choose a safer option to express our emotion. Correct. Emotional expressivity is important. Hiding our emotions or shying away from expressing our emotions can cause a lot of damage. I think it's important to teach people, and also it's important to create an environment around us that how people around us can feel safe to express their emotions, right? Of course, it's important to express our emotions, and also create a safe environment for people around us so that they feel comfortable to come to you and talk to you about their emotions, right? Because it's emotional expressivity, as I said, is a very important step towards being able to process your emotions effectively. Now, all of us got some coping strategies, right? Internal coping strategies. For some people, listening to music helps, going for walks, right? We all got like our own ways of processing our challenging emotions, right? So identifying what works for you, right?
and also trying to what I suggest is like making a list of top 3 internal coping strategies, right? So when you're in a moment where you need that, you need to mindfully decide how you're going to process your emotion, you can pick one of those coping strategy and try to utilize it. So for example, for me, as I said, writing works, right? Making art works, or going for a walk, listening to music. So I always have those 3 or 4 internal coping strategies. I always make sure that, if I'm in a moment where I need to process a challenging emotion, I'm able to write, I'm able to make art, or if not, like I'm able to go out for a walk, I'm able to listen to music, right? I have these resources accessible to me, and choosing to process emotions in, I would say, in an effective way. So yeah, that's step number 3. Superb. So, just wanted to ask you one thing, because there are a lot of people, specifically when it comes to relationship, like when they break up of that relationship and so on, they feel completely negative and so on. So after that, they listen to sad music and all of those things. That negative loop keeps continuing. So if we listen to sad music after that, because like feeling sad itself is an emotion, right? So once we listen to sad music, so is it going to actually suppress our emotions, or is it actually going to help us to get out of that negative loop? So as I said, like we all got our own ways of processing emotions, right? Some people Yeah. listen to upbeat music just to get back to, where they were, and process emotions in that way. But also listening to sad music can be a way of acknowledging what you're feeling. Don't you agree? Okay. Like if you're feeling sad and then you're listening to, sad music, maybe it's kind of like I would say like double, like ensuring that what you're feeling is valid, right? Like it's a normal response to feel sad after a breakup. So Okay. it So you works mean to for. Mhm. So you mean to say it's not going to suppress, but it's just going to validate that whatever we are feeling right now, it's Yeah, it's okay to feel that. yeah. And Okay. as I said, like different things work for different people, right? It may be like someone's way of processing, right, those challenging emotions and validating the sadness they are experiencing after the breakup. True. Now, another example, alone time. A lot of the True. times when somebody, express that they need alone time, we automatically kind of like a thought comes up that, like maybe it's a sign of depressed mood. But True. sometimes unplugging completely helps you to recharge your batteries, right? It could be an internal coping strategy for someone, right? And that works for me as well. Sometimes I do need alone time instead of like me finding a way to, like really like let it out, right? I choose to have alone time so that I can spend some time by myself and try to really understand what I'm feeling, and just giving it time and reminding myself that it shall too pass, right? So as I said, like sometimes like we automatically come to a conclusion that someone choosing to listen to sad music may be a way of suppressing emotions, but maybe that's helping that person to validate his or her feelings and emotions. Yeah. Okay. So you mean to say like solitude, right? Simply, it's like solitude Yes. as well. Superb. Yeah. And so these are the 3 steps. Is there any next step, or these are the top 3 steps? No, I think the next step is more of like, okay, what worked for you? Kind of like self-reflection, right? Okay. Um, which coping strategy worked for you? How did you manage to sit with your feelings? Right? It's more of like self-reflection, what worked for you, so that you can use the same kind of a guideline to process the emotions again, right? So as I said, like triggers are always around us, right? True. Sometimes what trigger us is not even visible. It's internal conflict, right? It's not like Correct. something in the outer world which has happened, and that's the reason why you're experiencing challenging emotions. Sometimes it's just internally what you're feeling, your internal world, right? It's always going to stay. Triggers are True. always there. And us being more mindful, trying to become more self-aware can always help us that every time we encounter those triggers, we can
choose to respond in an effective way, so that we are not hiding away from our emotions, or we are not choosing to not talk about our emotions, or we are just, trying to stick to them, host our emotions, and then giving ourselves an opportunity to process them in the best possible way. Superb. And do you feel like, as we are discussing about emotions, so is there any role of different cultures in setting up those emotions? And how do we Yes. react to those emotions? Like, let's assume right now, if I'm in USA, and let's assume my friend is in India, both of us are having same emotion, but just because of different cultures, we are reacting to that particular emotion in a different manner. Do you feel that this makes sense, or this is complete bullshit? It does make sense. Your environment does affect you in many different ways, right? And also the emotion sometimes, like as I said, that for example, same situation, if I encounter a same situation like you, maybe it will take me days to process that emotion, and you may be able to process that within a few minutes, right? It happens because we all got like different emotional sensitivity. We all got different self-awareness, different level of self-awareness, right? And back to your question, of course, our environment, like environmental factors, our environment, society we live in, community we are in, affect how we choose to process emotions, and even like our reaction to a certain situations. And what are the different emotions which you would like to actually go deeper into, and mention, like how do we actually, uh, maybe we can reflect that whether we are in a right loop or a wrong one. Like as we discussed about fear and anger, and as you mentioned about that 4-step process. So maybe you can take it up to you. What are the different emotions which you would like to mention here, which are actually most important and which are most common amongst people nowadays? Yes. So as I said, all emotions are important. Yeah. Every single emotion is trying to teach us something, right? The reason why I picked anger is it's because it's very common for people to label anger as a negative emotion. So that's the reason why I chose to talk more about anger. And there's always hidden layers. Like anger is a secondary emotion. There are other emotions underneath. Anger is just on the surface we see, right? Disappointment causes anger, sadness causes anger, guilt causes anger, right? So maybe you're experiencing one of those, which is turning it into anger, and that's coming to the surface. That's what we see when we see someone getting angry. We just see someone choosing to respond that way, choosing to react that way, but we don't try to dig into why that anger is on the surface, like why the person became angry, because maybe there was an internal conflict going on, and the emotions built up, and now the person had no other way of like reacting that way, and now we can see person becoming angry, right? Sadness is another one. um yeah, as you mentioned about like which ones I think are more common ones, right? I would say sadness, and feeling sad is valid. It's completely, all the emotions, all feelings are valid, right? What sadness is trying to teach us, it's trying to teach us maybe our expectations were not met, True. right? In any situation when we feel sad, if we kind of like think about it on a deeper level, our expectation, some kind of expectation wasn't met. That's the reason why sadness came to the surface. True. Yeah. Maybe it could be sadness from somebody else, like they Yeah. are not able to meet our expectations, or sometimes it's sadness from our own self that we are not able to achieve the benchmark which we set for ourselves. So that's really true Yeah. one. And as per your own study and as per your own experience so far in your field, are there any emotions which are most underrated and which people feel like, this is not an emotion, why are you feeling this, and this is complete waste of your time, why are you feeling that emotion, and so on? Have you observed any of those most underrated emotions, but those are important as well? Yes. So I would say like not underrated emotions, but underrated situations, or I would say like some situations which gets misunderstood. So for example, um, me losing some of my money, right? I'm just giving you an Okay. example. Yeah. Might not affect me. It might not be like
kind of like I wouldn't perceive it as end of the world for me. But another person experiencing that, even though if they lost like $2 out of their pocket, may be end of the world for that person, because maybe that person is on some kind of like financial support. Maybe their financial condition is you know different than me. Maybe they are on a budget. So before we kind of like judge like why it's even like, before we even like judge someone's situation and tell them like why it's affecting you this way, we have to like mindful of, maybe it's not a big deal for me, but for that person it may be, because their True. situation is different. The person is in a completely different mindset. They live in a completely different environment, right? And that kind of like encourage us to be a little bit more emotionally intelligent, right? True. And as you yeah ask me like underrated emotions, I would say there are situations which can be Underrated. misunderstood, or we are like too quick to jump to a judgment, right? So for example, breakup, another example, right? Everybody's emotional sensitivity is different. And for a, like for a few people, like even a long-term relationship, breaking a long breakup of from a long-term relationship may not affect them too much. But whereas other people, like somebody else, even though the relationship wasn't long-term, it was just a few months, can be a big deal, right, for that True. person, because the emotional sensitivity is different. So yeah, very good question. And that kind of like, of course, like remind us to be a little bit more emotionally intelligent around um you know uh, and kind of like not jump to any kind of judgment, and hold safe space for people around us, so that they can be truly themselves and talk about their emotions, and not telling them, oh, it's invalid to feel this way, why are you taking it too seriously. That's true. And as we are discussing about that, how do we share our emotions with somebody else and so on? But I feel our parents are the most, you can consider, most easy to reach person, most easy to Yes. reach people with whom we can share our emotions. But as we have like generational gap between their son or daughter Mhm. and the parents and so on, so that is why their kids don't share their emotions or ups and downs, whatever they are happening in their life. So, what do you feel? What's the role of parents in a relationship between their kid and so on, while managing those emotions and all of those things? Yes. Huge role. So our cognitive map, right, our coping strategies, how we choose to react in certain situations, that map, like the roadmap, it develops very early on in our life. Childhood. Our childhood experiences kind of control our life, I would say. Um, how comfortable you feel with your primary caregiver, right? It could be parents, for some people, it could be someone else, like whoever the primary caregiver was in your childhood plays very important. And that relationship with your primary caregiver kind of like builds that roadmap for your whole life. How, what coping strategies you develop, how you choose to respond in certain situations. So it's a very good question. Of course, like your relationship with your primary caregiver is very important and crucial. And it is also important for, I would say, like younger kids to feel safe to express their emotions, right? Like that's something I feel that we can start on as a society, as a community, to teach younger kids, right? To be able to feel safe around parents, as you said, to tell them what they truly feel, right? Or anybody they trust in their life, to come up and tell them like what they have been experiencing, being true about their feelings, right? And encouraging the kids, if they choose to do that, encouraging them that it's a good sign that they can trust somebody in their life, and they're open to share their feelings, because it's not easy to open up about your challenges, what you're feeling, right? So if we can start to encourage kids, younger kids, to be open about talking about their feelings, building those healthy relationships with parents or anybody around them, to so that they have a resource, a support system to utilize when they have to process emotions, could bring a very positive shift overall in the community. So yeah. Superb.
Mm-hmm. But do you feel like, although there's a part of kids as well that they have to not suppress the emotions and tell all the things which they are facing in their life, but do you feel there's a role of parents too? Like maybe they can ask out their kids about what are they going through in their life, maybe in couple of weeks, couple of months, or on a daily basis as well, that what are you going through, what are you up to, and so on. Like, do you feel it's just one-sided, only kids should take the initiative, or parents can also take? It's a two-way street, two-sided. Yeah, it's not just on the kids to make that effort to be open about their emotions. Of course, as I mentioned earlier, to teach kids, right? Your children, or if there's a younger child in your home, right? To teach the kid that it is okay to talk about your feelings, right? Providing the encouragement if the kid chooses to open up about the emotions, because that's the way they will have that, I would say, positive reinforcement that they did a good job of expressing the emotions, right? So yeah, as I said, it goes both ways. Of course, the caregiver and the child, both of them play can work together to enhance emotional expressivity. Superb. So let's now shift the gears and let's discuss about mind-body connection, like mind-body and soul connection, because even this is the most important concept which I learned from my mentors, that till the time all of these three things are not in unison, if they're not connected to each other, you'll not be able to achieve the best possible outcome for yourself, even though you'll be working the same way. But if mind, body, and soul are connected, you'll achieve even more results than what you're expecting for. So let's discuss about that and let's break down all of those three things. So talking about mind, body, and soul, and before jumping into the questions part, I'll share with you my study which I got before starting this podcast and so on, that mind is straight away connected to our mental health, body is straight away connected to our physical health, and soul is straight away connected to our spiritual health. So that is why it's important to keep all of these three things at place to be the best possible person in our life. So what's your take on mind, body, and soul connection? Yes, माइंड बॉडी एंड सोल दे आर इंटरकनेक्टेड। और जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन करने की ट्राई करती हूँ जब भी बात होती है माइंड बॉडी एंड सोल इंटरकनेक्शन की, कि तीन पिलर्स हैं, जैसे Okay. तीन पिलर्स हैं एंड उसके ऊपर हम एक कुछ खड़ा करने की ट्राई कर रहे हैं, और उन तीनों में से एक भी पिलर जब थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है, गिर जाता है, तो क्या होता है? ओवरऑल सब कुछ ही डिसबैलेंस हो जाता है, राइट? सो True. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ but struggling internally and not taking care of your mental health, do you think you're a healthy person? Maybe Not at not, all. right? I faced that जी, one. Yeah. या जी, बिल्कुल। सो वही मैं बताने की कोशिश जो है यहाँ पर कर रही हूँ कि तीनों जो है माइंड बॉडी एंड सोल, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ जो है, राइट, आपकी इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ एंड आपकी फिजिकल हेल्थ, तीनों का ही इक्वल इम्पॉर्टेंट रोल है आपकी ओवरऑल वेलबींग में, होलिस्टिक वेलबींग में। और ये Okay. हम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम इन तीनों एस्पेक्ट्स पे इक्वल एफर्ट करें कि हम जो है ना एक बैलेंस रख सके अपनी लाइफ में। ओके, सो तीनों को पहले ब्रेक डाउन करते हैं, लाइक एज यू मेंशन कि लाइक तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, एक भी पिलर में ऊपर नीचे हो जाता है सो इट डजंट वर्क, बिकॉज ऑनेस्टली इट हैज वर्कड लाइक दिस कंसेप्ट कि यार अगर फॉर एग्जांपल आई वाज वर्किंग ऑन माय फिजिकल हेल्थ 2 years बैक, बट माय मेंटल हेल्थ वाज नॉट एट इट्स प्लेस, तो मेरा जो फिजिकल हेल्थ पे मैं एफर्ट्स डाल रहा था मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, बिकॉज आई वाज नॉट नोन अबाउट दिस कंसेप्ट एंड आई वाज नॉट नोन अबाउट even this concept that we can work on our mental health, right? So breaking down all of these 3 points, हम लोग तीनों ही चीज पे पहले डिस्कस करेंगे कि पहले हम मेंटल हेल्थ पे कैसे काम करें, what are the different areas involved in that, यस, या फिर सो फॉर different मेंटल, practices. जी बिल्कुल। सो जब मेंटल हेल्थ की बात आती है तो जैसे मैं इमोशनल एक्सप्रेसिविटी को बहुत इनकरेज करती हूँ, एंड मैं आप क्या कर सकते हो अपने इमोशंस को इफेक्टिवली प्रोसेस करने के लिए, राइट? वो जो जैसे मैंने बोला कि इंटरनल कोपिंग स्ट्रेटजीज हम सबकी डिफरेंट है।
आपके पास एक्सेसिबल होनी चाहिए वो इंफॉर्मेशन, आपके पास रिसोर्सेज अगर आप अपने लिए एक्सेसिबल बना सकते हो, कि अगर आपको किसी भी ऐसी सिचुएशन में आप हो जहाँ पे आपको जरूरत है अपने इमोशंस को प्रोसेस करने की, तो आप एक हेल्दी वे में कर सकें। और कुछ चीजें जैसे हैं कि जो हम डे टू डे, जैसे सेल्फ केयर की जब हम बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सेल्फ केयर जो है वो एक वन टाइम प्रोसेस है, या सेल्फ केयर के लिए एक दिन चूज करना कि हाँ एवरी संडे आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस सेल्फ केयर। आई थिंक सेल्फ केयर इज एन ऑन गोइंग प्रैक्टिस, राइट? True. और हर दिन, हर आवर, लाइक हर मोमेंट में हमें सेल्फ केयर थोड़ी बहुत जो है प्रैक्टिस जो है करनी चाहिए। अपनी मेंटल हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अपने इमोशंस को लर्न करना, कि अपने इमोशंस को हम हेल्दी वे में प्रोसेस कैसे कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ हाइडिंग, सप्रेसिंग, shying away from talking about your emotions. Like, what are the ways to process whatever you're feeling in an effective way? जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग को मेंटेन रखने के लिए। दैट्स ट्रू। तो व्हाट आर द डिफरेंट प्रैक्टिसेस? जैसे आपने सेल्फ केयर के बारे में डिस्कशन किया, देयर आर लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स हुम आई फॉलो जो बोलते हैं कि लाइक डू ग्राउंडिंग एक्सरसाइज, डू जर्नलिंग, रीड बुक्स, हैंग आउट इन नेचर। तो ये 3-4 चीजें बताते हैं, बट व्हाट आर योर प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स सेल्फ केयर टू कीप योर मेंटल हेल्थ एट बेस्ट लेवल? जी, सो मेरे लिए जो हमेशा वर्क करता है, तो ऑफ कोर्स आई इंजॉय कनेक्टिंग विद द नेचर। मुझे ऐसा लगता है कि नेचर जो है मुझे सिखाता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। जैसे मौसम बदलता रहता है, राइट? अगर आप ट्रू। किसी रिवर के पास टाइम स्पेंड करो, तो आप रिवर फ्लो करता देखते हो, तो आपको लगता है कि ओके, मेरे इमोशंस भी फ्लो कर रहे हैं जैसे ये रिवर फ्लो कर रहा है, राइट? कि नथिंग इज परमानेंट, राइट? तो वो बट वो मेरे लिए वर्क करता है। और जब हम ग्राउंडिंग टेक्निक्स की बात करते हैं, तो मैं सबको यही इनकरेज करती हूँ कि आप आइडेंटिफाई करें कि आपके लिए क्या काम, क्योंकि ये जरूरी नहीं है जो मुझे मेरे लिए वर्क कर रहा है वो आपके लिए भी वर्क करे। हम सब पर्सनली डिफरेंट चीजें जो है हमारे लिए वर्क करती हैं। बट जैसे कि आपने स्पेसिफिकली मेरे लिए पूछा, राइटिंग जो है, जर्नलिंग, practicing gratitude is another one which I started practicing gratitude. I started practicing gratitude last year, और उसने बहुत ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है मेरी लाइफ में डाला है, क्योंकि मुझे हमेशा ये एक रिमाइंडर मिलता है कि ऑलवेज देयर इज ऑलवेज समथिंग टू बी ग्रेटफुल ऑफ, राइट? इवन दो इफ आई ट्रू। एम एक्सपीरियंसिंग सैडनेस और फ्रस्ट्रेशन इन द मोमेंट, बट कुछ तो है मतलब जो जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हो सकती हूँ, राइट? करेक्ट। अपने थॉट्स को लिखना जो है वो अनदर एक प्रैक्टिस है, जो कि मैंने चाइल्डहुड में ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दी थी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैंने अपने थॉट्स को लिखना शुरू कर दिया था, एक वे मुझे मिल गया कि मैं अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर पाऊं। जो भी ओके। इंटेंस थॉट्स हैं, सबसे ज्यादा इंटेंस थॉट्स हैं, मैं उनको एक लिस्ट बनाकर लिख लेती हूँ, 1 2 3 4 5। एंड उससे क्या होता है कि मैं अपने, एक होता है ना कि माइंड को ऑर्गेनाइज कर पाती हूँ कि कौन सी फर्स्ट 3 थॉट्स है जो सबसे ज्यादा इंटेंस है, और मुझे शायद अभी उन्हीं पर फोकस करना है, सो दैट आई डोंट फील ओवरवेल्म्ड। ओके, करेक्ट। सो यू मीन टू से लाइक जैसे आपने एक जर्नलिंग के बारे में बताया, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग के बारे में बताया। सो जर्नलिंग सिंपली मीन्स जो भी हमारे थॉट्स हैं, जो भी हमारे इमोशंस हैं, उसको हमें नोट डाउन करना है। एंड ग्रेटिट्यूड जर्नल इज जस्ट द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड टू यूनिवर्स की व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स वी आर ग्रेटफुल फॉर, राइट? यस। एंड सुपर। जो प्रैक्टिस करना है ग्रेटिट्यूड, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इट डजंट हैव टू बी अ लॉन्ग प्रोसेस, राइट? हम्म। एक क्विक रिमाइंडर अपने आप को देना, व्हाट आई एम फीलिंग ग्रेटफुल फॉर इन द मोमेंट, राइट? इन द मोमेंट। एंड या एंड जो जर्नलिंग है, जर्नलिंग कई बार हम इसीलिए स्टार्ट नहीं करते क्योंकि हमें लगता है यार बहुत एफर्ट लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, हम रोज हमें लिखना पड़ेगा। बट जर्नलिंग जो है ना, वो कई बार एक लाइन, 1 लाइन इन अ डे जर्नल्स भी मिल जाते हैं, कि सिर्फ एक लाइन, सबसे ज्यादा इंटेंस आप क्या फील कर रहे हो उसको लिख देना। और जर्नलिंग, राइटिंग योर थॉट्स डाउन एक ऐसा प्रोसेस है कि आप अपनी, एक होता है ना कि आप अपने आप को सेल्फ डिस्कवर कर सकते हो, एक आपकी जो एवोल्यूशन हुई एज अ ह्यूमन बीइंग, राइट? उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। कई बार मैं जर्नल्स जब आप रीड कर सकते हो कि आज से 2 साल पहले आपको जो आप जो वेज में अपने इमोशंस को प्रोसेस कर रहे थे, आपकी वेज चेंज हो गई हैं। वो सिचुएशंस में भी आपको इतना अफेक्ट नहीं कर रही हैं जितना वो आपको 2 3 साल पहले कर रही थी।
maybe as a human being you're evolving, and it gives you self encouragement, right? So इसलिए मैं इन practices को जो है encourage करती हूँ, because they're safe, first of True. all, right? Very safe way of expressing yourselves. एक वेज, हमें ऐसी वेज हैं जिसके साथ हम सेल्फ डिस्कवरी पर काम कर सकते हैं कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम कैसे इवॉल्व हुए हैं या हो रहे हैं. Correct. And we don't even need to depend on somebody else ki yaar, this is what I'm Yes. feeling and I want to share something with you and so on. I feel this is the best way. या आई फील द सेम. एंड जैसे कि आपने बोला कि किसी के ऊपर ये जो डिपेंडेंसी है हमारी, ये थोड़ी सी कम हो जाती है. खत्म तो नहीं होती, बिकॉज वी नीड But कम सोशल हो जाती है. कनेक्शन. Yeah. या बट कई बार होता है ना कि आप अ, जो है पहले तो ये कि सोशल कनेक्शंस भी है, आप उसी के साथ बात करें जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, एंड यू कैन आइडेंटिफाई कि वो पर्सन आपको एक बहुत ही नॉन जजमेंटल अप्रोच के साथ सुनेगा. ये नहीं है कि आप Correct. अपने इमोशंस के बारे में बात कर रहे हो एंड वो पर्सन जो है कुछ किसी तरीके की जजमेंट आपके लिए होल्ड करता है, एंड देन इट्स जस्ट गोना अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ इन लाइक इट इज गोना टेक इट इन अनदर डायरेक्शन, राइट? That's true. बट जब हम अपने खुद जो है अपनी सेल्फ डिपेंडेंसी, कुछ ऐसे रिसोर्सेज ढूंढ लेते हैं, लिखना हो गया, या मतलब जैसे मैंने बोला कि स्पेंडिंग टाइम आउट इन द नेचर, या गोइंग फॉर अ वॉक, राइट? कि हम अपनी इंटरनल कोपिंग स्ट्रेटजीज कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड उनको यूटिलाइज करना जब हम शुरू कर देते हैं, तो वो थोड़ी एक डिपेंडेंसी जो है हमारी अपने सोशल सपोर्ट के ऊपर जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है. मैं आपको रिसर्च के बारे में एक बताना जो है वो चाहूंगी इस पॉडकास्ट में. आई Sure. थिंक इट्स गोना बी informative for a lot of our listeners. मैंने रिसेंटली एक रिसर्च स्टडी के बारे में पढ़ा कि क्योंकि मैं भी थोड़ी क्यूरियस थी कि स्पेंडिंग टाइम आउट इन नेचर है ना, हमें किस तरीके से अफेक्ट करता है. एक शिकागो में यूनिवर्सिटी है जहाँ पर ये रिसर्च स्टडी हुई थी, कि जो स्कूल्स जो है ग्रीन एरियाज के आसपास लोकेटेड है, जैसे फॉरेस्ट्स हो गए, बड़े बड़े प्ले ग्राउंड्स हो गए, राइट, आउट इन Mm-hmm. द नेचर के पास जो है लोकेटेड है, उन स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं, लेटर ऑन इन देयर लाइफ्स उनकी जो एक होता है ना सेल्फ कंट्रोल Uh-huh. एबिलिटीज जो है वो ज्यादा है उन बच्चों के Okay. कंपैरिजन में जो कि एक ऐसे स्कूल में पढ़े हैं जिसके आसपास कोई ग्रीन स्पेसेस इतनी नहीं थी. एंड Mm-hmm. आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है स्पेंडिंग टाइम आउट इन नेचर. एंड आपकी जो एक कॉग्निटिव एबिलिटीज है, राइट, इमोशनल रेगुलेशन को एनहेंस करता है स्पेंडिंग टाइम आउट इन नेचर. सो मे बी दैट्स द रीजन व्हाई आप इतना सुनते हो सोशल मीडिया पर कि स्पेंडिंग टाइम आउट इन नेचर कैन हैव अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट इन योर लाइफ. That's really true. मुझे I या can completely accept and agree with every single point which you mentioned because मैं खुद एक एक चीज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते आ रहा हूँ एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 years कि यार जो भी चीजों को मैं लाइक इन्वॉल्व करता हूँ अपनी लाइफ में, इट्स जस्ट हेल्पिंग मी टू अपग्रेड माई सेल्फ. कोई भी चीज से मुझे डाउनग्रेड नहीं देखने को मिल रहा है, नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है. एवरीथिंग इज helping me to be more on the positive zone. So thank you so much for pointing those points as well. Points as well. Second is with respect to the physical health for sure. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार I can't work out for 1 hour 2 hour every single day. But what are the bare minimum things जो हर कोई कर सकता है so that they can keep their physical health up to the mark, at least up to the जी mark. जी बिल्कुल. सो अब जैसे एक्सरसाइज की भी आप बात करें, ऑफ कोर्स किसी को मुश्किल लग सकता है कि रूटीन बनाना कि मुझे जिम ही जाना है, राइट? बट जो एक्सरसाइज है वो कई बार आप घर पे भी कर सकते हो. आप थोड़ा माइंडफुल हो सकते हो कि भाई एक एलिवेटर लेने से बेटर ये है कि मैं स्टेयर्स से चला जाऊं नीचे, राइट, सो दैट आई Correct, गेट अ correct. लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज, राइट? कुछ हल्की फुल्की मूवमेंट कर ली, बॉडी मूवमेंट्स आपने प्रैक्टिस कर ली, राइट? क्योंकि उससे क्या होता है कि जो एक्सरसाइज है ना, एक्चुअल में इट इज अ ग्रेट एंटी डिप्रेसेंट. ये भी रिसर्च स्टडीज ने जो है तभी हमारी जो फिजिकल हेल्थ है वो सपोर्ट करती है हमारी इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ को. क्योंकि बहुत सारी रिसर्च स्टडीज ने ये भी प्रूव किया है कि एक्सरसाइज जो है वो उससे 26% जो है डिप्रेशन रिलेटेड सिम्टम्स इंप्रूव हो गए. Wow. um, That's a huge number actually. 26%. Like जी 1/4 straight away. जी.
और आप देखो कि इतना फर्क कई बार हमें एंटी डिप्रेसेंट जो है मेडिकेशन लेने से भी नहीं पड़ता, जितना जो है एक्सरसाइज से पड़ रहा है, राइट। कई बार ना अब जैसे आपने बोला कि कुछ नॉर्मल जो है डे टू डे चीजें कौन सी हम कर सकते हैं, प्रैक्टिसेस कौन सी हैं अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। गेटिंग इनफ स्लीप, राइट, अपने स्लीप पैटर्न के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, कि किस तरीके से हम मेक श्योर कर सकते हैं कि हम एडिक्वेट स्लीप जो है हमें मिल रही है। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि कई बार हम जब हमें इनफ स्लीप नहीं होती है हमारी, तो ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली हम थोड़ा इरिटेटेड फील करते हैं द ट्रू, फॉलोइंग डे, राइट। ट्रू। अपने न्यूट्रिशन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। अब जैसे खाना है, राइट, नेसेसरी फूड, राइट, थोड़ा सा न्यूट्रिशन पर ध्यान दे देना कि कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी इनटेक हमें ज्यादा लेने की जरूरत है, ताकि हमारी जो है फिजिकल हेल्थ भी ठीक रहे, एंड कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारी इमोशनल हेल्थ को, साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी सपोर्ट करते हैं, जैसे कि प्रीबायोटिक्स हो गए, प्रोबायोटिक्स हो गए, राइट। करेक्ट। नॉर्मल डे टू डे, जैसे मैंने आपको बोला कि होलिस्टिक वेलबींग जो है, अब वो एक वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ये मुझे लगता है कि ऑन गोइंग प्रोसेस है, राइट। एवरी डे हम अपनी होलिस्टिक वेलबींग के ऊपर काम कर सकते हैं। सेल्फ केयर के लिए ऑफ कोर्स कई बार हमारा आइडिया होता है कि भाई एक दिन ही हम, हफ्ते का एक दिन निकाल सकते हैं अपनी सेल्फ केयर के लिए, बट जो मुझे लगता है कि सेल्फ केयर जो है वो एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि ऑन गोइंग है। आप अपना यू नो छोटी मोटी चीजें, मेकिंग श्योर दैट यू स्टे हाइड्रेटेड, करेक्ट। है ना। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जैसे मेरा एक्सपीरियंस वर्किंग विद पीपल विद स्पेशल नीड्स, राइट, पीपल लिविंग विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, अब उनकी जब वो कोई चैलेंजिंग इमोशन जो है एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, या किसी भी तरीके का बिहेवियर्स को अपने मैनेज करने में उनको डिफिकल्टी हो रही होती है, तो जिस तरीके से हमें ट्रेन किया जाता है, um, आपको सरप्राइजिंग लगेगा कि पहली चीज हमें ये ट्रेन किया जाता है कि आपको मेक श्योर करना है कि उनकी बेसिक नीड्स मीट हो रही हैं, उनको इनफ स्लीप, डिड दे गेट इनफ स्लीप, डू हम्म। दे हैव अ स्नैक इन देयर पॉकेट, इफ अगर उनको भूख लगी है, ये ऐसा तो नहीं है कि उनकी भूख जो है वही उनको जो है थोड़ा सा एक चैलेंजिंग बिहेवियर्स की तरफ वो चीज जा रही है, राइट। क्या उनकी जो बेसिक, बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमारी होती है, हमारा फूड, राइट, इनफ, टेकिंग इनफ कंज्यूमिंग इनफ फूड, स्लीप अपनी इनफ रखना, राइट, ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है ना, वहां से हम शुरू करते हैं, and उसके बाद हम जाते हैं कि उनके बिहेवियर को हम किस तरीके से उनको मैनेज करना जो है सिखा सकते हैं। सो ये सब इंटरकनेक्टेड है। दैट्स ट्रू। एंड आपने जैसे एक पॉइंट बताया दैट सेल्फ केयर इट्स नॉट अबाउट कि हमें पूरे 7 दिन में सिर्फ एक ही दिन में आधा एक घंटा ध्यान देना है। इट्स लाइक जैसे हम रोज फोन को या लैपटॉप को चार्ज करते हैं, इन द सेम मैनर वी हैव टू चार्ज आवरसेल्फ सो दैट वी कैन मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर डे। हम्म, बिल्कुल। So that's a great idea. And what's your take on the third point, that is spiritual health? Like, what are the different ways where we can be to the best mark? Yes, so spiritual health, prayer, meditation, right? Of course, बहुत लोग religious हैं, तो religious एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना उनको एक होता है ना कि एक होलसम लाइफ जीने का एक मीनिंगफुल मीनिंग देती है उनकी लाइफ में, राइट। बट जो Correct. स्पिरिचुअल हेल्थ है, जिस तरीके से मैं इसको देखती हूँ, स्पिरिचुअल हेल्थ कनेक्टिंग विद योरसेल्फ, राइट। यहाँ Correct. की जो चीज पर्पस, आप पर्पस जो है आपकी लाइफ का, जो आपको लगता है कि मेरी लाइफ का शायद ये पर्पस है, या ये एक्टिविटीज करने से मेरी लाइफ मीनिंगफुल फील होती है, उनके साथ आप कितना कनेक्ट करते हो, वो मेरे लिए स्पिरिचुअल हेल्थ है। सो उसके ऊपर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार होता है ना कि ऑफ कोर्स लाइक फिजिकली यू आर हेल्दी, है ना, मेंटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियली यू आर डूइंग वेल, बट एक पर्पस आप लूज करते हो। कई बार True. ऐसा लगता है कि um, फिर भी मेरी लाइफ इतनी मीनिंगफुल नहीं लग रही है मुझे, कई बार True. True. लगता है ऐसा। सो Correct. इसीलिए वो भी जो है आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ जो है वो भी इंटरकनेक्टेड है आपकी इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग से। And what are the practices which you follow? या like आपको spiritual books पढ़ते हो, या फिर आप religious book कोई पढ़ते हो, या फिर आप meditation करते हो? What are the different practices you follow to be at the best level in spiritual health? जी, मैं जो है सोने से पहले ट्राई करती हूँ कि मैं थोड़ा टाइम अपने आप के साथ स्पेंड करूँ, मैं थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्ट करूँ कि मेरा दिन कैसा था,
कौन सी चीजें मैंने अच्छे से की, क्या मुझे लगता है कि मैंने कुछ मीनिंगफुल किया अपने दिन में, या जो हम्म। मुझे लगता है कि जो चीजें मुझे हैप्पीनेस देती हैं, वाज आई एबल टू मेक टाइम फॉर दोज थिंग्स। किस तरीके से मैं एज अ ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हो रही हूँ। कई बार वो जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है वो पिछले 6 महीनों की या साल की कर लेना, कि भाई मेरा पिछला साल कैसा गया, इस साल कौन सी चीजें जो मैं कर रही हूँ जो कि मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ को थोड़ा सा और मीनिंगफुल बना रही हैं। सो ऐसी चीजें मैं करती हूँ। रिलीजियस प्रैक्टिसेस यस, बट मुझे ऐसा लगता है कि खुद के साथ जो जब मेरी स्पिरिचुअल अपनी स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करने की बात आती है, तो खुद के साथ कनेक्ट करने की मैं थोड़ी सी ज्यादा जो है ट्राई करती हूँ, प्रेफर करती हूँ। Okay. So, which means like again, solitude वाला zone, like you have to spend time with yourself. आपको introspect करना है कि what are the different things which went right and what are the things which went wrong, और कौन सी चीजों को change कर सकते हैं. So that's a good one. जी And emotions के बारे में ही discuss करते वक्त, like not about emotions but we can discuss about mind, body and soul. तो कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि यार उनके तीनों ही चीजें अप टू द मार्क है, बट अगेन उनकी लाइफ में वो बैलेंस नहीं हो पाता है. लाइक व्हाट आर द रीजंस डू यू फील कि लाइक उनकी लाइफ में बैलेंस क्यों नहीं आ पाता है? इज देयर एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम माइंड, बॉडी एंड सोल, या फिर वही तीन चीजों में से वो किसी एक चीज पे मिस आउट कर रहे हैं? आप जी आप बहुत सारे इसके रीजन जो है हो सकते हैं। अब इसको और ज्यादा डीप लेवल पर अंडरस्टैंड, ऑफ कोर्स लाइक ये हो सकता है कि आप तीनों चीजों के ऊपर ध्यान दे रहे हो, बट फिर भी आपको वो आपकी लाइफ फिर भी आपको लग रहा है कि आप होलिस्टिकली इतने ठीक जो है बैलेंस्ड फील नहीं कर रहे। सो मैं यहाँ पर वेलनेस व्हील व्हील की बात करना चाहूंगी, जो कि एक होता है ना और ब्रॉड स्पेक्ट्रम ओपन अप कर देता है कि हम और डीप हाँ. लेवल पर समझ सके होलिस्टिक वेलबींग को। सो उसके 6 स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट है फिजिकल वेलबींग, जो है जिसमें कि ऑफ कोर्स यही मैटर करता है, जो है बेसिक जो उसका फैक्टर्स जो मैटर करते हैं कि हम अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, राइट। दूसरा है इमोशनल एस्पेक्ट्स, राइट, उसमें जिसमें कि ऑफ कोर्स इमोशनल की हम अपनी साइकोलॉजिकल जो है वेलबींग को किस तरीके से मेंटेन रख रहे हैं, अपने इमोशंस को हम एक अच्छे वे में प्रोसेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा है इंटेलेक्चुअल ओके. वेलबींग, राइट, आपकी आप वो मेंटेन कर पा रहे हो कि नहीं, जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है, या फिर आपकी एनालिटिकल थिंकिंग जो है, आप उसको अच्छे वे में यूटिलाइज कर पा रहे हो कि नहीं। करेक्ट. कई बार ऐसा होता है ना कि हमें फील होता है कि भाई क्रिएटिविटी तो है, बट मैं इसको मे बी इतने अच्छे वे में यूज नहीं कर पा रहा। अब वो भी फुलफिलमेंट आपको हो सकता है ना दे रही हो वो चीज, वो फैक्टर जो है उसके कारण आप फुलफिलमेंट की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हो, राइट। चौथा जो है वो है आपका करियर। अब करियर ऑफ कोर्स जो है इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, बट कई बार होता है ना कि जो आप जॉब करते हो या जो करियर पाथ आपने चूज किया है वो आपको फुलफिलमेंट दे पा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हाँ जॉब तो है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो भी है, लेकिन फुलफिलमेंट नहीं है। करेक्ट. फुलफिल आप मीनिंगफुल लाइफ आपको नहीं लग रहा कि बन रही है करेक्ट. उस करियर पाथ में, राइट। अब ये एक और डायरेक्शन खुल गई, राइट। उसका पांचवा स्टेप जो है वो है सोशल फैक्टर्स, राइट। जो आपके आसपास लोग हैं, आपकी फैमिली हो गई, आपके फ्रेंड्स हो गए, जिनके साथ आप डे टू डे बेसिस में इंटरेक्ट करते हो, कोवर्कर्स हो गए, कोई स्ट्रेंजर हो गया जिसके साथ आप इंटरेक्ट करते हो, या आप जिन कॉमन एनवायरनमेंट्स में रहते हो, आप क्या अपने आसपास लोगों के साथ एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बिल्ड कर पा रहे हो या नहीं। कई बार ये होता है कि हमें लगता है कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बिल्ड नहीं हो पा रहे, राइट, चाहे वो फ्रेंड्स हो करेक्ट. गए, फैमिली हो गई, हमारे आसपास के लोग। अब वो भी आपको हो सकता है कि फुलफिलमेंट इस फैक्टर के कारण आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट आप फील नहीं कर रहे हो, राइट। एंड सबसे लास्ट स्टेप जो है वो है स्पिरिचुअल। आपका अपने साथ कनेक्शन कैसा है, राइट, आप अपने साथ कैसे कनेक्ट आप कर पा रहे हो या नहीं। कई बार लगता है कि आसपास सब कुछ राइट है, सब कुछ अकॉर्डिंगली जा रहा है, एवरीथिंग सीम्स परफेक्ट, बट अपने साथ आपका जो रिलेशनशिप है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, वही उसी में आपको फील हो रहा है कि मैं अपने साथ कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। मुझे जैसा रिलेशनशिप मेरा अपने साथ होना चाहिए, जो अब इसमें हमें इंकरेजमेंट ये भी मिलती है कि जो सेल्फ टॉक है, अपने साथ हम बातें करते हैं, अपना इंटरनल मोनोलॉग जो चला रहता है, हम उसके साथ थोड़ा माइंडफुल हो जाए कि हम हम्म. अपने आप को क्या फीड कर रहे हैं, हमारे अपने थॉट्स हमें क्या फीड कर रहे हैं, राइट। ओके.
सो अब जब हम जैसे कि आपने बोला कि हो सकता है कि फिजिकल हेल्थ ठीक है, इमोशनल हेल्थ ठीक है, स्पिरिचुअल हेल्थ ठीक है, फुलफिलमेंट फिर भी हमें नहीं लग रहा कि फुलफिल्ड लाइफ है हमारी, तो हम उसको इस वेलनेस व्हील को इम्प्लीमेंट करके देखें कि कौन सा वो एक फैक्टर है जिसमें हमें फुलफिलमेंट नहीं मिल रही, एंड मे बी उसके कारण हम जो है एक होलसम हमारी जो लाइफ हमारी नहीं बन पा रही, या हम एक बैलेंस फाइंड नहीं कर पा रहे। आई होप कि ये जो सारी एक्सप्लेनेशन थी वेलनेस व्हील की, ये हमारे लिसनर्स को हेल्प करेगी कि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा ये एक फैक्टर है इनमें से। अब एक भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकता है, कि जिसके कारण वो जहाँ डिसबैलेंस जो है वो आइडेंटिफाई कर पाए। दैट्स रियली ट्रू, बिकॉज आई फील कि यार अगर तीनों ही एरियाज बिल्कुल अप टू द पॉइंट है, तो कहीं ना कहीं इट्स ऑल अबाउट, या तो हमें करियर में फुलफिलमेंट नहीं है, या तो हमें इंटेलेक्चुअल वाइज फुलफिलमेंट नहीं है, या फिर जो हमारे सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं या तो वो बहुत ज्यादा है, या फिर वी आर इन द रॉन्ग एनवायरमेंट ऑल टुगेदर, right? So I think that's a different conversation in itself, like talking about wellness wheel and so on. But that's the end of this particular podcast. Honestly, पूरे जो conversation था, I learned a lot from this particular podcast as well. So once again, thank you so much for being on our podcast show. Definitely we'll cover part 2 where we will discuss about the wheel of life, and वहाँ पे मैं आपका जो आपका 12 years of experience है so far, तो मैं उसके बारे में भी जानना चाहूंगा. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच. Yeah, thank you so much, Sahil. I so much enjoyed this conversation, and I'm thankful for you giving the time to record the podcast. Thank you. Thank you so much. So that's the end of this particular episode. I hope that you learned and enjoyed a lot from this epic episode on emotions regulation and mind body soul connection by Palak Darwal. Please do make sure that you check out all her social media links, which are given below in the description section. Also, we have an amazing gift by Palak ma'am, which is that you can attend her upcoming webinars and workshops absolutely for free. All you have to do is you can join her community. The link is also given below in the description section, and you can work upon your emotions with Palak ma'am. And please do make sure that you check out all her social media links. And also, please do make sure that you check out all the previous episodes of the Achievers Club podcast show. And whatever takeaways you had from this epic episode, do share below in the comment section. Hit the like button and subscribe to our YouTube channel. And I look forward to see you in the next episode. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.